जी मोहसिन, शेयर कीजिए आप। ट्राई टू कीप इट विद इन 10 मिनट्स, राइट। थोड़ा सा ये आपने ख्याल करना है, बहुत लंबी प्रेजेंटेशन को थोड़ा कर्टेल करना है, और जो मैंने जिस तरह कंटेंट बताया था उसको फॉलो करते हुए ट्राई टू फिनिश इन 10 मिनट्स। स्लाइड शुड नॉट बी मोर देन 15 to 16 स्लाइड्स। राइट सर। राइट सर। सर ये पहली साइट तो ये जो आपने सर असाइनमेंट दी थी ग्रांट प्रपोजल की, तो ये मैंने सर्च किया था सर। ये किसी ने प्रोडक्शन करनी थी, उनने हैवी मेटल ऑक्साइड ग्लास बेस्ड, और उसका उन्होंने किस्सा किया, तो ये एक मैंने एक स्लाइड बनाई थी। और देन सर कमिंग ओवर टू सर, ये हमने जो पेपर क्वालिटी मैट्रिक्स जो आपने बताया था सर, ये 10 जो पेपर हैं इन्हीं को मैंने रेफर भी किया हुआ है सर। और इसी के आगे इसके उसको क्वालिटी भी देखी है कि इसका स्कोपस, वेब साइंस और एच इंडेक्स क्या है और इम्पैक्ट फैक्टर्स क्या है सर। तो ये सर वो सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट सर जो आपने दी थी। ठीक 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 ठीक। सर सर कमिंग ओवर टू माय टॉपिक, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस with mediating effect of social integration and effective communications. So sequence is as flagged. Sir, coming on to the introduction, sir. सर ये एग्जैक्ट इट इज एग्जैक्टली जो सर आपने सर बताया है। फिर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन इट्स सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट इसकी मेथोडोलॉजी किस तरह हम करेंगे सर। सर विद द increasing effect of globalization, people from different cultures interact much, and thus cultural diversity has become a unique feature for modern workplaces. And diversity impact is the social interaction and unity prominent for organization operating in project-based sector. Sir, my research is basically based on Pakistan automobile industry, and this case of Pakistan automobile industry is a perfect example for the challenges of integrating cultural diversity into an emerging market. Currently, the industry has many registered manufacturers, and since its emergence, it has grown to play a strategic role in the development of the economy. Although the literature has paid attention to cultural diversity in developed economies, the dynamics of cultural diversity in the context of Pakistani organization are comparatively presumed and uninvestigated. Sir, the research study which we will do will eliminate a gap in the literature about the effectiveness of cultural diversity on the automobile industry in Pakistan. Sir, it is focused on social integration and effective communication. As both the factor they will mitigate diversity processes, it offers valuable insight into diversity processes in the workplace in overall developed economies. So these are the definition of cultural diversity, social integration, and communication. This is I will skip, sir. Sir, coming over to the problem statement, which that is to study the impact of cultural diversity on project performance, specifically in Pakistan automobile industry. Coming over to a literature view, in the five basic research paper which I have uh, included. First is sir, the Australia sir. They were in total sir 10 members, and the title was the impact of cultural dimension on project manager performance, and it was published in International Journal of Organizational Analysis. Their methodology was they explored about 200 professionals, project managers, and their finding was the हॉफस्टाइज कल्चर। सर जो चार उसने हॉफस्टाइज ने चार बताए हुए हैं, जिसमें इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, मस्कुलिनिटी विद एंड अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। तो दिस उनकी सर लिमिटेशन थी कि उनका दे हैव स्टडी द डाटा इन क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल नहीं था, और उन्हें फ्यूचर में दे हैव रिकमेंडेड टू मेक रिसर्च इन सर। मोहसिन, काइंडली अपनी सर द वीडियो नेक्स्ट।
वीडियो ऑन कर लीजिए आपकी, थोड़ा फेस भी नजर आ जाना। सर मैंने इसको ऑन किया, आई डोंट नो ये। हाँ, अच्छा चले, कोई बात नहीं, अगर ऑन किया तो मेरे ख्याल में आ जाएगी थोड़ी देर में। चलिए ये बताइए कि आपने समरी सारी सर। अपने लेक्चर्स की शेयर की हुई है ना मेरे साथ? जी सर, मैंने की हुई है सर। की हुई है, ठीक है। ठीक हो सर। गया। आप बस जारी रखिए, वीडियो देखें, अगर कहीं ऑन ऑफ हो रही है तो उसको ऑन कर दीजिएगा। किसी ने चाय पीनी है? एनीवन? सर मैंने फील फ्री। यहाँ से ऑन सर की। अच्छा चले, ठीक है। अगर वैसे हमें विजिबल नहीं है, मे बी देयर इज सम इशू, तो आप जारी रखें सर। और देखें, अगर कहीं ऑन हो जाए तो अच्छा, अगर आपका फेस भी नजर आ जाए ना। अभी तो आपकी पिक्चर नजर आ रही है, तो पहले आप लेक्चर जी में तो सर आप मैं लेक्चर में तो आप रहे अवेलेबल, मेरे ख्याल में सारे लेक्चर्स आप देखते रहे। जी हाइब्रिड। सर मैं लेक्चर में था सर। ठीक है, ठीक है, चलें, आप जारी रखें जी, बिस्मिल्लाह करें, आगे चलें। सर। जी अब सर वीडियो आ आई होप सर अभी। गई, अभी वीडियो आ गई अभी। सर। ठीक है। सर। सर। बोले आप, बोले, आवाज आपकी सर। रुक गई है, सर बताइए। बिल्कुल। सर जो सेकंड जो हमने मैंने सर उसका रेफर किया है, वो सर इफेक्ट ऑफ टीम डाइवर्सिटी ऑन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इन द कंस्ट्रक्शन। सर देयर वर टोटल 4 मेंबर्स, और इनने सर ये दे पब्लिश देयर पेपर इन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट, ये 2019 में उन्होंने सर किया। और वो कहते हैं कि दे स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन क्रिएटिंग a culture that supports social integration. An effective manager who develops a culture that promotes diversity and involves a group in fun related which minimize the diversity in the group. और इसमें सेट के ग्रुप को cohesiveness इंक्रीज करता है सर। द थर्ड paper which I have reviewed, sir, which that was effects of team diversity on social uh, project performance. और ये सर देवर 3 मेंबर्स लियांग, और 2007 में सर इनने पब्लिश किया था इन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। And sir, their purpose was to calculate the relationship between the knowledge diversity which was present in the project teams, and एंड देयर सर देयर फाइंडिंग वाज कि उसमें सर जो जो टास्क का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें उनकी जो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस थी वो बेहतर की, बिकॉज जो डिफरेंट कल्चर के लोग आ रहे थे, दे हैड दे डिफरेंट मेथड टू सॉल्व एनी सर जो इश्यूज आते हैं, दे हैव दे ओन सर ways to solve these sort of issues सर। उसके बाद सर नेक्स्ट जो मैंने किया सर, वो सेट हेल्थ एंड रेवलिंग द इफेक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन टीम, दैट वाज पब्लिश इन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये भी सर मैंने स्टार्ट में सर इसकी रैंकिंग की थी, अच्छी इसकी रैंकिंग थी सर। और सर इसका पर्पस था टू चेक द टास्क कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चरल aspect as the size of the team and the tenure of the team, ये कितने अरसे के लिए वो प्रोजेक्ट टीम एक साथ इकट्ठा काम करती है, एंड देयर टीम डिस्कशन। एंड इसमें सर उन्होंने कोई 10,000 प्लस टीम्स को दे सर्वेड, एंड उनका रिजल्ट था कि इसमें जो कल्चर डाइवर्सिटी होती है, दे समटाइम दे क्रिएट लॉसेस इन दी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, जो उसको लूज करते हैं। और उस एट द सेम टाइम उसके अंदर जो प्रोजेक्ट में बेहतरी आती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्रिएटिवनेस प्रेजेंट इन द डिफरेंट वो जो बैकग्राउंड के लोग आते हैं सर। एंड सर लास्ट जो मैंने सर पांचवा सर किया है, वो दैट वाज कल्चर डाइवर्सिटी एट वर्क। इट वाज पब्लिश इन ह्यूमन रिलेशन, एंड इट वाज डन बाय सिंगल राइटर रिसर्चर ब्रिन नागा in 2007, and his purpose was that does a diverse racial and cultural composition of group leads to positive or negative outcome of the groups. And he himself followed international project group for over 17 months, or
एंड इसने सर दोनों चीज़ें देखी कि इसमें कल्चर डिस्कोर्स हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस सर गैप एनालिसिस पे सर द सोशल इंटीग्रेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर द फैक्टर दैट can interact and moderate these opposite influences to give the team advantages and avoid different drawbacks of diversity. And there is a need to address the cultural effect on the project management performances by focusing on method, processes, and practices that should be applied, and a need to understand how can a project management teams control the cultural effect and take advantage of it to enhance project success. And so there are still many gaps in the existing literature, especially considering the dynamic nature of and the geographical location of Pakistan. क्योंकि सर यहाँ पे क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आई हैव फोकस्ड तो देर आर डिफरेंट बैकग्राउंड लोग आते हैं डिफरेंट एथनिक हैं हमारे सर प्रोविंशियल एथनिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं or this study seeks to make theoretical and methodological contribution and offer a blueprint for tackling diversity matter in project-based structures. So coming over to the objective of this paper, that is to measure the relationship between the level of cultural diversity and performance of automobile projects in Pakistan. Then is to examine the mediating role of social integration in culturally diverse project team that also include our manufacturers of automobile. And lastly, to investigate how effective communication strategy can mitigate the challenges of cultural diversity and enhance team performance. And there's basic research question, which are how does cultural diversity impact project performance in Pakistani automobile industry? Then is what role social integration plays in mitigating effects the culture, effects of cultural diversity on project performance, and how can effective communication strategy enhance team performance in culturally diverse project settings? Sir, then I have just gave the variables. Here the variable is cultural diversity, which dictates the dependent variable, which is the outcome or the good performance of any project team, sir. And main mediator for these good performances is the how much they are socially integrated and how they have effective communication among the team, and how they will contribute to the good performance of the project or any task they are undertaking. Sir, out of these five, already I have given in the literature review, these two papers I have focused more. The first is the impact of culture dimension on project management performance, which was published in International Journal of Organization Analysis. And their technique was qualitative, and they have surveyed over 200 observation. Mainly, they have gave questionnaires to the project managers and which who are dealing with with the project team involving different national team members. And their limitation was they have used the cross-sectional data, and their limitation was that it can be the result can be different when it is examined in longitudinal way. This second the paper I have studied more in this research paper, the effects of team diversity on project performance in construction project, which was published in Journal of Engineering Construction and Architecture Management in 2019. And they have also used quantitative research with the questionnaire sent to 246 professionals, and their limitation was the important factor of communication, trust, and contract was not studies in details. अच्छा मोहसिन, एक Sir, चीज my थोड़ा सा मैं sir, आपको यहाँ पे आपने लेक्चर सारे लिए हैं, ये जो आपके रिलेटेड पेपर्स हैं ना, ये आपको लिटरेचर रिव्यू में सारे रिलेटेड पेपर्स ही बताने चाहिए। और वहीं पे आप पांच sir, पेपर की ये मेथोडोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। मतलब फ्लो जो है ना, ये आपका ठीक नहीं है। थोड़ा फ्लो को जरा जाके दोबारा देखिएगा, लेक्चर्स भी देखिएगा कि sir, प्रेजेंटेशन sir, फ्लो जो है आपका वो ठीक नहीं है। sir, तो खैर, अभी तो sir, आपने
बता रहे हैं बता दें, आइंदा के लिए सर ज़रा। सर लास्ट टू स्लाइड। ठीक है, और अभी आप जो है ना तकरीबन कोई 25 मिनट से बोल रहे हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। सर चलें बताएं आप, अब जो फाइनल रह गया है सर मेथोडोलॉजी लास्ट किस। स्लाइड। जी। Sir, methodology will be quantitative, and it will be a survey questionnaire based, and it will be 5 point scalar, and time will be 6 months, including collection and analysis of data. Sir, sample size total manufacture of automobile in Pakistan is 19, and total labor force is 6.8 million. And as sir, you told us how to take the sample from the check market. In the 6.8 million, we must invite about 5,000 plus people, so that we get the required sample of 1,000 people. 1067 सर ये बता रहा है, with the constant level of 95% and margin of error of 3%. ठीक है So ठीक है। that's ठीक है, फ्लो को ज़रा चेक रखें, कंसाइसनेस को चेक रखें, जी सर। और इम्पोर्टेंट चीज़ों सर पे फोकस करें, नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ों को थोड़ा सा कटेल करना है आपने। बाकी जी ठीक है, सर। टाइटल आपका फाइन है। आपने चीज़ें ऑलमोस्ट सारी टच की हैं, एक्सेप्ट लिटरेचर रिव्यू से मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आया, वो थोड़ा सा आपने उस तरह नहीं किया जैसा करना चाहिए था। क्वालिटी मैट्रिक्स सर आपने मुझे दिखाया, ठीक है, आपने उनको पेपर्स को देखा है कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, समरीज आपने सबमिट की जी हुई हैं, तो दैट्स जी गुड। सर। अच्छा करें आइंदा भी, आपके मिड टर्म में जो है वो 23 मार्क्स हैं आउट ऑफ 25। सर थैंक यू सर। ठीक है मोहसिन, थैंक यू वेरी मच। आप क्या करते हैं अभी, व्हाट इज योर प्रोफेशन? सर आई एम एन आर्मी सर, ईएमई सर, अच्छा, आप डिग्री 24 मैं कर। इंजीनियर हैं आप, ठीक है ठीक है ठीक है, चलें, गुड हो गया मोहसिन। सर कहाँ पे स्टेशन सर है? थैंक यू सर। सर आई एम इन ईएमई सेंटर कोटा सर। ओके ओके जी, चलें, दैट्स ग्रेट मोहसिन। सर तो सी यू सर थैंक यू सर। मिड टर्म एग्जाम, टेक केयर, और लेट्स गिव चांस टू थैंक नेक्स्ट। यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल सर। थोड़ा सा मैं एक दफ़ा दोबारा सबके लिए रिपीट कर दूं जी, कि अपनी स्लाइड्स के ऊपर जो फोकस आपने रखना है ना, वो अपने लिटरेचर रिव्यू को फोकस रखें, और अपनी प्रपोज मेथडोलॉजी को फोकस रखें सारे। ठीक है, बाकी चीज़ों को फ्लैश करें, दैट कैन बी सीन कि वो आपने की हुई हैं, और आपने फॉर्मेलिटी सारी पूरी की है। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, ताकि टाइम के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो। काफ़ी सारे लोग हैं और हमने ख़त्म करना है, ये ना हो कि ये कुछ लोग आज रह जाए फिर, जो देना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन। सो थोड़ा सा इसका ख्याल करना है, और स्लाइड्स को कोशिश करें 15-16 से ज़्यादा स्लाइड्स ना हो आपकी। और अगेन टाइम जो है वो अपना घड़ी सामने रखें, 10 मिनट में कोशिश करें कि अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज करें। और बाकी पता चल जाता है आपकी प्रेजेंटेशन से कि आपने कितनी एफर्ट की हुई है, उसको वन कैन फील कि आपकी एफर्ट कितनी है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आपने अच्छा काम किया तो वो नज़र आएगा। तो ओके जी, अभी नेक्स्ट आप में जो इस वक्त ऑनलाइन है, इनमें से हु इज़ इंटरेस्टेड टू प्रेजेंट नाउ? सर मैं करना चाहता हूँ सर। नुमान, ठीक है जी, नुमान शेयर कीजिए, यू आर गिवन दी गो हेड। सर आई होप आई एम विजिबल, माय स्क्रीन इज विजिबल एज वेल। जी जी, आप विजिबल हैं नुमान अहमद, स्टार्ट कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Numan Ahmad, and I will be taking your 8 to 10 minutes. Will be talking on the topic career pathways after matriculation, analysis and solution on student decision making in Pakistan, and impact of social pressure. This research has been supervised by Dr. Irfan Zafar and submitted by me. Sequence of this research is as pledged, starting from the abstract, gap analysis, introduction, literature review, research methodology, and conclusion. So this study dives deep into the factors shaping career choices for matriculation students. It highlights the challenges of decision making influenced by society pressure and lack of structured guidance and inadequate resources. Sir, I explored these gaps through surveys, literature analysis, identified the critical areas for intervention. To address these, I propose a digital counseling platforms, mentorship, and the counseling between the institutions at the early stages of students. So these are some research papers which I have gone through, which are as flashed.
This is my timeline chart. I started from 10th November and just finished 2 or 3 days before. So the gap which I have generally faced here, that there's a lack of structured counseling. As the report shows, 60% of the students get insufficient career guidance, inadequate social support and mentorship, limited awareness of career options, 45% of unaware diverse career pathways, cultural and financial constraints, and insufficient digital mentorship platforms. Uh, Introduction, sir. The problem, sir, this is the problem which this topic, sir, is very dear to me. This is the problem which I generally faced. Sir, after matriculation or after intermediate, students generally lack guidance. They lack career pathways. They are in the social pressure, in the parental pressure, and lack of resources. Significant to this problem, career decisions are made which influence the long-term satisfaction, financial stability, and well-being. So statistics show that 70% of the employees in Pakistan and 60% globally are dissatisfied due to the poor career alignment. I want to give to the solution as well, sir. I want to address these gaps through career counseling programs, mentorship, and creation of digital platforms. Sir, my literature review consists of mainly 3 papers. The first was Indian paper, application of data science in career pathways, um, in career pathways and employability analysis from secondary and higher education students. So this was the research paper which was written by 2 Indian authors. They were the professors of psychology department of AIMS University, India. So this is the related research paper to me. The limitations which I faced, that they have used the data sciences application to define the career pathways of the students, whereas I want to work on the societal influence, parental influence on the career of the students. Second is the well-being and career decision-making difficulties among master students, assignment multi-equation modeling. So this was the research paper written in UK by 4 professors of UK. But this was the limitations of this research paper, that it defines the thesis, the research work after masters. Factors influence the choice of career pathways, high school students and Midland province. So this is the most related research paper with my topic, but it does not define the career pathways or the parental influence, which I'm mainly focused on. So this was my literature review. Here, with the help of this literature review, I got the social and psychological influences impacts. Social support systems such as family, peers significantly affect career decisions. Lack of guidance leads to job dissatisfaction and distress. Role of schools and institutions, social pressure and cultural expectations. With the help of this literature review, I'm going to give digital solution and mentorship platform. Sir, my research methodology consists of 2 parts. First is the literature review. First is the data which I has collected from the previous research papers. And secondary, my proposed research methodology as you have suggested. So this is the Google form which you can see. Sir, I want you to take to the Google form to the research proposed research analysis which I have done by my own self. Sir, if you can... sir, I hope my Google form is visible to you. So this is the proposed responses. This is the response or data which I have collected, research methodology of my own self. I have collected the response of 50 plus individuals from different provinces. Here is the form. The main thing which I want to show you in here is that, sir, I asked from 37 individuals who are currently employed somewhere, government or private. 57% of progs said that there was a lack of career counseling at in their time. 60% said that they influenced by social pressure. I asked 40 individuals and 63% said there were enough career guidance. I asked from 38 individuals and 77% of progs said
that if they have given a guidance from experienced students or professional, they will seek it. Sir, coming to over my proposed solution. So this is a solution which I want to work on later stages in a practical way. Sir, after matriculation or after intermediate, generally students lack experience. They are not aware of the challenges or the market ahead of them. Sir, I want to create a platform. Means, for example, this is a website or this is a digital platform. So this platform hires the senior students of the universities. For example, this is the student from NUST. This is the student from PIAS. This is a third year or fourth year student from GK or FAST. So this is me, who has done the intermediate recently. Sir, I'm confused which career I have to select. I have to go into the engineering. In the engineering, I have to do the mechanical engineering, civil engineering, computer engineering, or software engineering. So this platform hires these students, these third year or fourth year students from different universities, and pays them a little amount of pocket money, about 10 to 15,000 per month. So this is me who has done the intermediate now, who has cleared the FSC. After the FSC, I pay some fee to this platform, 500 or 1,000 per video call, and this platform connect me to that senior student of different universities. I got a video call through this platform to that student for 15 minutes. He told me about the pros and cons of NUST. Then I got a call. I have a video call with a student from FAST. He told me pros and cons from the FAST. Sir, in this way, student get multiple benefits. Number one, he can get to the know about his field he want to go. Number two, he can get a latest market analysis because these students are currently entering their fields into the industrial zone. This is very economical and globally available. The second solution which I proposed are counseling programs at school levels. Third, there should be a collaboration between the students, between a collaboration between the institutions, uh, colleges and universities and schools, and there should be a governmental or institutional support to fund these students, to create initiatives of underprivileged areas to support, to provide a career guidance to the students. So in conclusion, there should be a empowering decision making. Parents should support the decisions of their children, of their younger ones. There should be a role of digital platforms. Means there should be the digital platform which I have recommended. There should be the digital platforms like this. There should be a collaboration support from the schools and colleges. Uh, uh, there should be the social pressure. There should be a platforms. There should a student, parents or society should not pressurize the individual to select a field. And the students which are living in the rural areas, there should be the initiatives, scaling initiatives for them, and a continuous feedback mechanism. So this was my little research, and in future I want to carry this on into the practical approach. So this is all from my side. Thank you, sir. अच्छा ठीक है नुमान, आप लेक्चर सारे देखे हैं आपने? जी जी सर। ओके। और समरीज भी आपने सबमिट की हैं? सर, मैं लास्ट वीक की सबमिट नहीं करवा पाया, बाकी मैंने सीआर को सबमिट करवा दी है। तो ठीक हो गया। और क्या आप एज अ प्रोफेशन क्या करते हैं आप? सर, मैं इंजीनियर हूँ, आर्मी में हूँ सर मैं। ओके, क्या कहाँ पे हैं इस वक्त? सर, मैं मंगला में डिप्लॉय हूँ। आगे एक कंपनी हम उसमें है सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया नुमान, इस टॉपिक पे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी थोड़ी सी बहस की थी कि ये जो टॉपिक आप लेके चल रहे हो ये रिसर्च टॉपिक नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट का टॉपिक है। और आप डायरेक्शन ठीक है आपकी, मतलब आई वुड से कि ठीक है, एक अच्छा प्रोजेक्ट इस पे हो सकता है। और इसको आप एक अच्छी सी एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई अच्छा सा एक क्लाइंट सर्वर मॉडल डेवलप कर सकते हो जिसमें लोग एनरोल करके और असिस्ट करें एक दूसरे को। और बट ये जैसे आपने खुद भी नोट किया होगा कि इस पे आपको ना कोई रिसर्च पेपर्स लोगों ने लिखे हुए शायद आपको इतने नहीं मिले होंगे, और आपको थोड़ा सा खुद भी इसमें प्रॉब्लम आया होगा। तो थोड़ा सा इसको इस पर्सपेक्टिव से ज़रा देखने की ज़रूरत है आपको कि इसके अंदर रिसर्च कंटेंट कैसे आएगा।
क्योंकि ये सारी स्टैब्लिश फिनोमेनाज हैं जिन पे आप बात कर रहे हो ना, तो रिसर्च की जाती है थोड़ी सी ऐसी चीज़ पे जिस पे कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ आपने निकालनी हो। तो आई वुड से कि थोड़ा सा इसमें वो चीज़ एक मिसिंग है। बाकी आपका करेक्ट। इरादा अच्छा है, आप ठीक डायरेक्शन में सोच रहे हो। इसको थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव से एक दफ़ा रिविजिट कर लीजिएगा। और थैंक यू। बाकी ठीक है, आपने अपने इस वक्त जो यहाँ पे भी आपने डिस्कशंस की हैं इसमें, इसलिए लिटरेचर रिव्यू मुझे नज़र नहीं आया, ना ही किसी किसी और पेपर की कोई अप्रोच नजर आई कि जिसने कोई अप्रोच डिस्कस की हो कि इस तरीके से ये काम किया जा सकता है, मेरा प्रोसेस ये होगा, और एक रिसर्च पेपर लिखे वो उसके ऊपर। तो वो चीज़ें इसमें थोड़ी सी मिसिंग है। बाकी आई थिंक ठीक है, आपने एफर्ट की हुई है, मेहनत की हुई है। मैंने आपका मिड टर्म का पेपर देखा, उसमें भी थोड़ी चीज़ें आपने मिस की हुई हैं, मे बी शायद शायद फोकस नहीं किया होगा लेक्चर्स पे। उसमें आपके 17 मार्क्स हैं आउट ऑफ 25। बट विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एंड टर्म एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है नुमान, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके जी, आउट ऑफ द अवेलेबल ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, कौन अस्सलाम अवेलेबल है? वालेकुम सर। तो मैं कर देती तो कौन इंटरेस्टेड है जी? हूँ 15। सर सबा। बिलाल भी। सो दिस इज हुज स्क्रीन इज बिल, बीइंग शोन। चलें, तो आप जो शेयर कर सकता है करे शेयर जी। सर बिलाल, मैं कर दूं? एनीवन कैन शेयर, आप कर लीजिए शेयर, चलें। अपनी वीडियो भी काइंडली ऑन कर दीजिएगा ताकि वी कुड सी यू एज वेल। और आई रिपीट जी, प्रेजेंटेशन को काइंडली शॉर्ट रखें, टू द पॉइंट रखें, और जो बात फोकस करने वाली है उस पर फोकस करें, और अननेसेसरी चीज़ों पे जो है थोड़ा टाइम कम लगाएं। ठीक है बिलाल, आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी सर, मुझे आवाज़ आ रही है। चलें जी, बिलाल स्टार्ट कीजिए। एक तो मुझे ये बता जी दीजिए कि सर। आप क्लास में आप पार्टिसिपेट करते रहे, आते रहे, या आज पहली दफ़ा आए हैं? सर मैंने एक क्लास ली थी वैसे। अच्छा और ठीक है, वैसे। आप एक दफ़ा आए हैं, मैं पहचान गया हूँ आपको। ठीक है जी, आपकी और समरीज आप लेकिन सबमिट किए हैं या नहीं किए हैं, ये कंफर्म करें। सर मैंने किए हैं, शर्त शुरू का एक या दो लेक्चर की समरी रहती है मेरी, बाकी सारी हो गई हैं। अच्छा चलें, ठीक हो गया जी, आप स्टार्ट कीजिए, बट अगर रिपीट अगेन इसको क्रिस्प रखिएगा, ठीक है, टू द पॉइंट रखें। जी सर। जी। सर मेरा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रिसर्च रिसर्च प्रपोजल। सर मेरा टॉपिक है असेसिंग द रोल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 5843। अननेसेसरी बातें नहीं करनी ना, ये तो कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर बताने की अच्छा क्या ठीक जरूरत है जी, ठीक है। है अपनी क्लास में ही। चलें जी, जारी रखें, जारी रखें। जी बिलाल, चुप हो गए हैं आप? सर एक बार सर मैं स्क्रीन, मुझे ताकि खुद को पूरी नजर आ जाए, मुझे पूरी खुद को नजर नहीं आ रही। सॉरी सर। सर इंट्रोडक्शन है मेरे टॉपिक का। Introduction. In this global age, the stable development of economy is necessary for betterment of the population, which can be attained to educate the technical and vocational training TEVT skills, which leads to development of the small and medium-sized industries (SMEs). TEVT education is comparatively costly as compared to general education, so which the developing countries population cannot invest fully as per demand. So government and international agencies help the TEFT educations departments via funding and try to establish the TEFT infrastructure in developing countries. सर लिटरेचर रिव्यू के हवाले से ये 5 पेपर्स मैंने लिए हैं, जिनकी कुछ चीज़ें कोटेशन, जिनकी चीज़ें मैंने रेफर की हैं। लेकिन जो मैंने पढ़े हैं या जो जिनको मैंने डिस्कस किया है वो ज़्यादा हैं जिन पे मैंने काम किया है। लेकिन इन 5 के मैंने हवाले दिए हैं, रेफरेंसेस दिए हैं। और सर डिटेल तो जैसे बाकी लोगों ने बनाई हुई है, हर एक का किसने किसके क्या प्रोज हैं, कौन से किसके क्या मसाइल हैं, वो मैंने हर एक के अलग से तो नहीं लिखे। लेकिन ये है कि मैंने इनको पढ़ा है और इनसे रेफरेंसेस लिए हैं सर। सर उसके बाद जो इनका जो क्वालिटी चेक है, वो सर हर जर्नल का टाइटल है, और फिर उसका जर्नल का नाम है, उसका वेब ऑफ साइंस पे स्टेटस है, साइंस डायरेक्ट पे उसका
जो क्वार्टाइल है, और SRG पे उसकी जो लिखी हुई है उसकी स्ट्रेंथ है। इसी तरह H इंडेक्स, इम्पैक्ट फैक्टर, 5 साल का इम्पैक्ट फैक्टर भी कुछ चीज़ों का है, कुछ का नहीं है। और साइड स्कोर भी है। और इसी तरह किस कंट्री का है, ये थोड़ी सी इस पे मैंने लिखा हुआ है। तो सर जो बाकी कुछ पेपर ऐसे हैं कि जो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने 5 ही इसमें रखे हैं। और आपने गाइड भी किया था कि 5 ही तक, मिनिमम 5 होने चाहिए कि जो जिनको आप प्रपोजल में आप सबमिट कर सकते हैं। सर गैप एनालिसिस की बात करें तो दिस स्टडी वांट्स टू फाइंड आउट हाउ इम्पोर्टेंट it is to invest in TEFT instead of invest in general education. Further, how much the skill and technical training is better for the people in order to stand the citizens on their feet and satisfy their necessities and needs by gaining financial growth. Moreover, this study establishes the importance of TEFT in technology development also. Objective of my study will be to assess the inline technical education and vocational training TEFT in important as compared to general education for economic growth. Second objective, to analyze the impact on economic oblique financial condition of TEFT educated people as compared to the other general education students. Number third objective is to find out role of TEFT in globalization and research work. Fourth, to measure the work efficiency in industry of skilled labor who have got the TEFT training or education instead of illiterate persons. Research question and hypothesis. First hypothesis will be the role of TEFT in development of any country and financial condition of citizens to provide jobs. Second hypothesis, TEFT is compulsory better as per as compared to general education, secondary education in line to stand on feet in the market. Third hypothesis, inline TEFT is necessary for industrial development and research. Significance of my study. The study also shows the more importance and give the comparison with general education. Further, it shows the impact of TEFT on the living standard of the people and the role of TEFT for development of demanding industry and for R&D, research and development, to compete the developing countries and developing country economies, and to give strength to the economic condition of related persons and their families, and to explore the inventions and to new business ideas to improve the efficient work. Research question and problem statements. Number 1, teaching education, technical education and vocational training is important as compared to general education for economic growth. B, impact on economic and financial condition of TEFT educated persons, people. C, number 3, role of TEFT is globalization and research work. The said query will be discussed in research process and it will be tried to prove that TEFT has good enough impact on said questions. Research methodology will be quantitative research and qualitative research, and correlation method will be used